How come your doctor back home allowed you to take so much time after the first surgery, beta? No, it was just that I felt it would be too painful to go through another operation back then. You mean, keep your head straight, beta? You mean emotionally? Yeah. Besides, it's also rare for people to donate eyes back home. Religious prejudice? Mm-hmm. Is this the coughing man? Erase gradient color. History. Brush down. Audio. Pick. 1. Brush tool. Brush tool. 11010189110. Are you going to do anything about it? File. Yeah. Edit. Image. Mode. Adjustment. Duplicate. Adjustments. Auto adjust. Auto levels. Auto contrast. What are you doing? -8. That looks nice. But which one do you like better? This one or Undo. this one? Show me again. Edit. Redo. That looks better. Do you want the background so dark? 889. Yeah. ميسون لسه متكلمه دلوقتي بتقول انهم كاتبين عنك في الاهرام النهارده بس انا لسه ما شفتوش. ما هم عملوا معايا امبارح حوار على التليفون. يا خساره كان نفسي ابقى موجوده. معلش يا ماما هبعت لك الصور والفيديوهات من المعرض. فين؟ وهو هيجي؟ مين هو اللي هيجي؟ ايوه طبعا يا ماما، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اكيد هيجي. اصل انا مش فاهمه يعني ايه؟ يعني ما شفتش غير 20 مره لمده سنتين وانت معاه في نفس البلد. يو بقى يا ماما، كل مره بتقعدوا تقولي نفس الكلام وبعدين اول ما تشوفيه تقعدوا تتكلموا كأن مفيش حاجه حصلت. تبقى شكلكم عاملين زي ما تكونوا حبيبه في ثانويه عامه. بس ان فكرتك رومانسيه كده عن اهلك. ماشي. Hey, hi Ella. How are you? I'm okay. Is Grunge again? Grunge? Well, I'm just lazy. You never sent me animation you made. Oh, I'll send it to you very soon. Did you record any new songs? Yeah, we did. I'll send that across to you. And how is your Arabic? Bambi Yala Lahul Vila Quwwat. I'm working on it. She'll be fine. N5.6 ISO 400 shutter 1500. Aperture 5.6 ISO 400 shutter 1500. N5.6 ISO 400. How is your mother? She's very good. She sends her regards. Uncle, what are these? Oh, those are bamboos. It holds the building together. They're holding the building together? Yeah. How come? Light orange. Deep yellow. અરે તને ફોર્ક આવડે છે કે નહીં? જો મેં હમણાં ફોર્ક કર્યું. સ્ટાર્ટિંગમાં બે નહીં તો એક થાય. હા. કેમ કિંગને સ્કર્ટ બતાવે? કિંગને બિલેટ ચલાવવાનો. I was just seeing where you are. The glass
Auntie, is this glass? I froze it for a second. I was really intrigued with the kid. He was really friendly, and I just kept on following him. And that's when one of those pictures were picked. So you mentioned on your site that you actually took up photography after you lost your eyesight to An a cornea infection. Yes. Yeah, true. Why photography? Well, first to document, archive, and remember. Then to kind of explore, understand, and see. So I guess all art evolves from a need to record the apparent to a need to capture the essence. That's very well put. I mean, that's exactly how it's been for me. When I first started taking pictures, I was very much amused by the character of the perfumer in Susskind's novel. Just the idea of a man trying to capture every scent, starting from people to the surroundings to experiences, was very much amusing. That's a very interesting analogy. Why black and white? It just gives you more control over the elements of my picture. But do you ever feel limited by anything? No. That's amazing. Is it? I mean, why is it so amazing to not have limits or no doubts? Honestly, I just can't wait to begin my life as a photographer. But you are a photographer. I mean, you're a good photographer. Hello? Hi. Hi. Is that your house? So I hear ducks and lots of animals. Are they inside? One more. Orlando, are you ready? Yeah. Auntie, can you start splashing? I want you, I'll take the pictures from there, okay? And I just want you to like, splash the water on this side. And my plastic size is 100. Yeah, this one is quite an image. All right, there's a very small pond at the bottom. And
is 4 ducks swimming in 4 opposite directions. And the one in the center is sort of frozen in the middle of its flapping of the wing. There's one sitting on the corner of the pond, away from us. It's wet. And there's one flying into the frame from the right and one flying into it from the left. Wait, it's actually a pair. And the woman? Oh, she's right behind the pond, standing upright, looking towards the top left corner of the image, and I think she's sort of splashing water in the same direction as well. She's got some sort of a contraption on her left hand. Yeah, it was framed. Huh? Well, it's giving a character. Nice. And what about the background? There's a lot of trees in the background. And a small house with a gable roof. Gable roof? A slope roof. And what about the light? Do you know, I like the way the light is falling. It's sort of angular, coming down from top left and behind. I think the background would have looked better with lesser elements. It's just too crowded at the moment, I think. Also, there's yellow pillowcases. Yellow? Yeah, it doesn't work as well in black and white as it does in color. Why were you looking at the colored version? I was curious. Okay, so will you vectorize it, please? Yeah, it doesn't, work as well with all the elements in the image to be brought down to a line drawing. Yeah, I know I'll miss on most of the details. I still like to see it, though. Sure, yeah. Well, do you want to say another one? Attacks, which is cast in one chamber partly before storming out. But then came another proposal arguing that should be penalized if the predictions they make don't turn out to be true. Reverse. बस See, there's one where the guy on the right side is actually being covered by a passing rickshaw, and you can only see his right hand pointing accusingly the other guy. I think that's the one. This looks nice. No, leave it. What? Why? It doesn't sound exciting to me. But it's a crazy moment here. It's nice. When you start making the sauce, it will be forever before we eat. Baby, all I'm saying is that it's a very good image. It's accidental. Oh, please, don't start that again. Don't start again. See, all I'm saying is that you don't have to be in conscious control of your art all the time. You can be intuitive. It is intuitive. I'm not writing intellectually stimulating essays here. I'm very much aware that I'm just taking pictures. Well, what then? Then what? What's your problem? I don't have one. What's your problem with this picture? I don't even know this picture. What's your hang-up? Look, I just feel that you're throwing away a brilliant piece of your art just because of a stupid hang-up. Fine. I don't like it, that's why I'm dumping it. Is that fair enough for you? Okay, let me just give you a perfect description, right? Let's vectorize it, or etch it, and write a piece of poem to capture the essence, and then you decide. No. What no? Listen, these are the things I depend on, right? I have to draw opinion and assurance about my own art away from what everyone else says. Yes, but you have continued to produce great work in spite of any problems. Says everybody. Who the hell is everybody? Everybody is so fucking stupid. They watch stupid soap operas, they fight over religion ideas, everybody. What are you talking about? What are we arguing about? Okay, I'll tell you what. Remember that other day at my parents when Uncle Kumar was talking about the orchestra I shot for? Yes, well, remember what he said? That he thought they were all right, so? No. He saw something to the effect of that he was wondering whether it was their music that was... listen, let me finish first. Stop doing what's this. It got to do with never let anyways? me finish my sentence. You don't even know what I'm going to say. Okay, make the point. I know where this is going, but make it anyways. So fight alone then, if you already know where it's going. Okay, what did he say?
Okay, he said something to the effect of that he didn't know whether it was the music that was being celebrated or the fact that they were all I blind. knew you were going to say this, right? I was there. He didn't say anything like that. Fine, good for you. I was hallucinating. And besides, why would he say something like that? Why are you being so obtuse? I'm being obtuse. Yes, I didn't That's say very that nice, those were but I'm the being exact obtuse. words. I said... No, I am being obtuse. I You know don't why? understand Because I know where this is going, and I don't want to go there. We have to go through this whole entire... Okay, yeah, exactly. Just being a lesser dramatic will help. Every time, it doesn't have to be this drama. I'm just so fucking scared of what will trigger off another unending phase of painful introspection. And I'll be left outside, guessing what the fuck you're going through. You're stifling me all the time by being so fucking scared. I wish you hadn't said that, Why are you taking this personally? It's not about you. Okay, alright. Let's take it easy then. You don't want the picture for whatever reasons, right? That's fine. Let's just put it in the memory box so that we can look back at what we were fighting about. If you wish, I have no such illusions. Well, why are you doing this? بعمل ايه؟ أنا مش فاهمة. Why did you get so hard suddenly? Let me in. Baby, you know your work is good, baby. ازاي؟ Baby, please. Do not patronize me, okay? طب واجتماعك مع كيرستي النهارده كان عامل ازاي؟ كويس. تخيلي رحنا انا وهي النهارده شوبينج، اشتريت حته فستان جميل. طب حلو. برلين تجنن يا عيال، لازم تشوفيها. تبقي تجيها يعني. هشوفها يا ماما في يوم هشوفها. ان شاء الله يا حبيبتي. طب بقولك ايه؟ فاكره واحنا صغيرين وانا صغيره يعني لما روحنا الفيوم وكنا عند النيل وبعدين كان في نيل ايه في الفيوم؟ بحيره. معرفش بقى يا ماما، نيل بحيره. المهم كان في كاريتة بجع. اوكي؟ في ايه؟ كاريتة بجع. كاريتة بجع؟ في حاجه اسمها كاريتة بجع؟ معرفش بقى يا ماما، بس عارفه لما يكون في حاجه انت فاكراها كويس قوي بس انت مش فاكره هي ذكرياتك انت ولا حد قالها لك ولا حلمتي بيها ولا معرفش هي، بس انت فاكراها كويس قوي. مش عارفه. لا انت خيالك غريب قوي. معرفش بقى. طب استني التليفون بيرن. ثانية. الو؟ Yeah, that's her. Yeah, I'll be right there. I'll be right there. Thank you so much. Bye. ماما. المستشفى كلمتني وبيقولوا ان هم جاهزين بالعملية. جاهزين بايه؟ بالعملية يا ماما. ممكن بس تكلمي فيناي وبابا يخليهم يجوا لي على طول على المستشفى؟ حاضر وانا هاجي على اول طيارة على المنطقة على طول. طيب بس بليز كلميهم بسرعة، خليهم يحصلوني. ها ما تنسيش كلميهم. Slowly open your eyes. Open your eyes slowly. Very good. Don't squeeze. Slowly keep it open. Open wide. Open both your eyes wide. Very nice. Very good. Open it completely. Can you see something better? Good. Very nice. Open. Open your eyes.
Very nice. You didn't sign up for this. The graft which we have put in is completely clear. It's beautiful. Let's look at the other eye. Left eye is the one which we did first, right? Good. Even the left eye is very nice. The graft is totally clear. It's even difficult for someone to find out that you are having a new eye.
change a lot. I think. I have to go. Sir, Bhaiya, excuse me. Yeah? Can I take pictures of you here? 2 minutes, 2 minutes. 2 minutes? Yeah? Okay. Here. Yeah. 1 minute. Okay. बाहर देखिए जरा यहाँ A frog once asked a centipede how is it able to walk on 100 feet so gracefully synchronized, while the frog finds it difficult to manage even two. The centipede took a moment to analyze its own walk and was baffled. So, as it tried to walk further, its feet got entangled and it tripped. No. Well, they're good pictures. No, I don't like them. What are you doing? Oi! You can't just delete that.
It's very dramatic. Have you seen the images? Yes, they're good. Good. Yeah. I think I really like them by now. How did your lecture go? I think I should focus on my book rather than wasting my time on lecture tours, you know. Should we get ready in an hour? Could you please call them and cancel? Sure. What? You didn't even protest. Have you given up on me or what? Of course not, baby. You can take it down with the blindfold. I can't just put it on before taking a shot and then take it off, right? Yeah? But you've seen the pictures. It really works. Would you please tell me what you really think? Like what? I don't know. That it's a naive and stupid fixation? Yes, it's naive, stupid, childish, and absolutely ridiculous. I think I just want to go somewhere inspiring. With that? No. You know, I've been doing some research and I came across amazing work that just left me overwhelmed. Like, there are a lot of photographers who stage elaborate scenes, costumes, lights. And I think it just gives them a sense of purpose. Or else you'd be just waiting there to be lucky, right? Or be at the right place. I mean, and even then, I really wonder what inner skill you need to have a great moment around you and the clicking of your camera come together. Yeah, but there must be something beyond that too, isn't it? Like beyond taking the picture? कुर्सी की पेटी बांधने के लिए दोनों सिरों को सामने लाकर परस्पर जोड़ें तथा दबाएं। पैसेंजर मास्क आपके ऊपर लगे यूनिट में रखा है। इसको कसने या ढीला करने के लिए खुले सिरे को खींचे या ढीला करें। कुर्सी सीधी कर लें, मेज
And now that you've saved its life, will you also give it a proper upbringing and a good education? What if it was a worm's karma to just lie there and get crushed? Well, is it lying there getting crushed? So perhaps it wasn't. Or worse, the worm was trying to commit suicide. And you have put it in the pot, and now it has to crawl its way back to nirvana. Do you believe in our case? I'm sorry, I didn't get your name. Charva. Char. Really? Your parents named you that? No, my parents named me Madhav after the great theologist Madhavacharya. But I decided to switch sides at the age of 14. No, yeah, I do believe in our case, but I'm here to learn to win an argument from both sides. Okay, I gotta go. All blind men trying to perceive the elephant. How are you blind? You're just wearing glasses. Serial number 4, lit petition 212 of 2010. Leadership, please. I appear on behalf of the petitioner. Please, my lord, I appear on behalf of respondent number 1. Yes, Mr. Gupta, a meat-eating lawyer for an animal rights case. My client has made me change my ways. Okay, what is this matter about? Well, this is about testing of chemicals on animals. Pharmaceutical companies in India are constantly violating animal rights. Every ethical and scientific research points to this having to stop. I know that may not be possible now, but what we are looking at is the complete elimination of cosmetic and non-essential research. Okay, that calls for a larger debate. Who is appearing for the board? Your Ladyship, we monitor 467 laboratories overall, and the report submitted by them has been as per the guidelines. It is very difficult for us to monitor on a day-to-day basis for this. These are my humble submission to this honorable court. Well, if this is the response of the board, then what remains in this petition? Public interest litigation nowadays has become more like publicity interest litigation, and this petition should be rejected at this stage. Okay. We will hear from you, Mr. Gupta. Very well. The question is that animals which are kept in laboratories, they are treated completely ruthlessly. They are to be killed, they are to die, and they are treated as dead. They are kept in cramped spaces, they fight with each other, they'll hurt each other, they get burnt, they get cut up, they suffer from diarrhea, paralysis. The conditions are despicable. In fact, my learned friend is not accurately instructed. We have recently installed air conditioning and 10 by 10 cages for these animals. Yes, but then you cramp 10 animals in those 10 by 10 cages. Well, that's certainly more luxury than a commuter enjoys on a suburban train in Mumbai. That was not warranted, Mr. Dastur. So what I was trying to submit was that there are many more pressing issues which the court should concern themselves with rather than this sentimental petition. Okay, we'll hear from Mr. Gupta. Well, the point really is that molecules require to be tested on animals before they are used on human beings. Well, I don't know about that because there's severe criticism of that from within the scientific community itself. Today we have stem cell research, we have computer-based research, there are many other options. The point that we are dealing with is the conditions in which these animals are kept and how they are treated. और आपके गुरुजी बॉस्टन में है, वो भी हमारे सबप्रिय मैत्रीय की तरह साधु कम और शास्त्री ज़्यादा है. चलो अंग्रेजी बोलने का कुछ तो फायदा हुआ. एंटी लेदर कैंपेन वाला जो पोस्टर. अच्छा, nice. Just cut down on the sentimentality of it. We have to address people's reason more. ठीक है? हम बहन जी आपसे तो बात ही नहीं करते. आपने वचन दिया था, भूल गए आप. आपका भाव था कि हमारे गुरुजी के लिए एक संस्थान का आयोजन किया जाए. आप ही का भाव था. गलती हो गई गुरु. आप लोग तो शरीर के साथ मस्ती में हैं, भूल गए हैं. छोड़ दिया है आत्मा को भटकने के लिए, हमारे पास भेज दिया. इसलिए हम कहते हैं, इसलिए हमने आपको याद करवाया कि आपने हमें वचन दिया था
कि आप हमारे गुरुजी के लिए बड़ा संस्थान रचाएंगे, बड़ी धाम-धूम से बड़ा वर्ग बड़ा निकालेंगे। बेटे की शादी एक बार हो जाए फिर आपके चरणों में निछड़ा चाहिए। शुरू करें? हाँ हाँ, महेश भाई का भी भाव था तो हमने कहा महेश भाई को कि आप ध्वजा लगवा देना। शुरू कीजिए, आप शुरू कीजिए। नाहं जानामि कम्पि देवं न दैवं नत्ति श्रोणीयन्ता नत्ति सग्गभूमिणनिर्यं नो जगकत्ताणो विकतायणाय जगहि सरोकोवि णरक्षौ णभक्षौणाय कालायो आदिष्ठो दण्डनायो कम्मुणो चैव दण्डं हंसयमेवा सत्था भूताय मे सुहदुः पिय संजोगाण युजरवन्याणगमम् अपसर्यो जीवो सवाण सुहुमति सुहुमेषु नत्थु कोविकयापि दुह्यो मया सया मे संवेयणा सच्च समग्गा बहवे सच्चो य एगरुगुणवरम् समया मे मणो ध्रुविः अवस्थासु मम पत्थणाः निज्जरौ वन्नाणकमं शुद्ध सासयरुवोहमियत्तु मे संयंसणम् अन्तेणाय भवौ चव्यं मे पयं मोक्षमग्गवो So I hear you are writing jokes. No, as in I have a stand-up act which I write myself. Say something funny. That's like me saying say something deep. I can be deep. See, once a monk went to a sandwich seller and asked him, make me one with all. Huh? I have one which is equally terrible. Which email can attain cyber enlightenment? Hey, what does that mean? Which email can attain cyber enlightenment? Which? One that has no attachments. I'm sorry, I'm just in this phase of life where I find everything that comes with no attachments rather fascinating. I read your book, by the way, and it was engaging. Oh, thank you for reading. I mean, I didn't buy it, of course, one of my friends lent it to me. But I have a few apprehensions. That's a good thing, tell me. Like, I haven't read the entire thing, but the 100 or 150 pages that I have read, I think about 130, you say you are an atheist, and at the same time you believe in the concept of soul, which I think is rather convenient. No, I don't think karmic causality is a reason enough for anybody to behave ethically. You know, that there is retribution of any kind in this life or any other, it's like a weak man's hope for some kind of cosmic revenge. I agree with you. It's very easy to believe in something out of fear and guilt. Correct. All ethics must be arrived at in isolation of religious beliefs. But are you able to practice that? I hope I am. अच्छा, साधु भिक्षा क्यों मांगते हैं? क्योंकि पेट के लिए ही तो सारी दुनिया भागम दौड़ करती है. And once that's out of the way, there are more important things we can focus on. And also it makes me more patient and humble. Humble? Yes. क्यों? So will you be begging my boss for food? नहीं क्यों? आपने humble पे. I remembered something. No, rituals are symbolic theatre. Once you have accepted the symbol or the truth behind the symbol, there is no need to stress on it all the time. And you're expecting more people to follow your religion? And I'm on no such mission. Okay, your ideas? Yes, I'd like to share them and see what comes out of it, but not in religious discourses and conferences. I'd like to share them with the political and scientific mainstream. Something like the Copenhagen Climate Change Summit? Yes, why not? बिल्कुल. और यहाँ से कोपेनहेगन कैसे जाएंगे? पैदल? बिल्कुल पैदल. Or you could go there, you could go in the plane, keep walking inside the plane. That way you get to Copenhagen.
Ah, so you found yourself a new protege? हाँ ये तो गुरु है. So, कल का इंटरव्यू कैसा रहा? वही Interview? He was on a talk show yesterday. Live? Did I miss something? No, not really. It's going to be broadcast in a month or so. Yes, it all started with the same assumption of me being a naive romantic who's trying to imagine that the world will turn vegan overnight. Well, don't you? Hey, Kamal, who has these delusions? All that we've demanded is a practical, reasonable, scientific change in the system so that we can lessen suffering. You know, I secretly share a part of that cynicism. I mean, does our case really hold? We are asking them to make the cages bigger, to better the hygiene, to stop the force feeding, the torture. But how does it make sense? Because they're all going to be butchered to death at the end. But let their lives be better than their death. Yes, and just because they are marked for slaughter doesn't mean you abuse and torture them. What kind of a logic is that? True. Tenzin Rinpoche was there yesterday. Yes, and I'm joining him for the peace march next month. अरे हाँ, मैंने सुना है कि वो किसी Chinese ambassador के आने के Yeah, विरोध trying में. to this time. What are you trying to do? Jagannath told me you had severe pain in the abdomen yesterday. वहाँ क्या देख रहे हो यार? कुछ जुलाब भी है क्या? No, nothing. And don't fool me into shelling out money now. You don't have money. Just lie down. गुप्ता जी कैसे हो? आपके लिए बुक लेके आए. Thank you. आपने मंगाया था ना? अंदर? आप ऑर्डर दिया था. Your liver is slightly enlarged. ये डिस्काउंट किसका? है डिस्काउंट सब कस्टमर को देता हूँ. It's okay. I'm आपको fine. दिया. दवाई लोगे? नहीं. Okay, only if it will be necessary. Yes, it will be necessary. Thank you, Mehta-san. Thank you very much. Thank you. अरे आपको किसने याद किया? आज आपके दर्शन के लिए नहीं आया हूँ. हमारे और भी मित्र हैं यहाँ. अपने देखने का. इधर आ गया. सांस लेना. बहुत अच्छा. बहुत अच्छा है. गोलियाँ दवाइयाँ बंद कर दो अभी? नहीं, जहाँ तक कोर्स पूरा ना हो जाए वहाँ तक चालू रखो. बाद में बंद करो. ठीक है? ये रहा तुम्हारा मैगजीन. अरे वाह. थैंक यू. तबीयत कैसी है? काढ़ा पी के ठीक हो गई. काढ़ा पी के ठीक हो गई तो दवाई नहीं ली? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी. तुम्हारा धंधा बंद करवा दोगे आप? चलता हूँ मैं. बैठे ना. नहीं, बहुत काम है. थैंक यू. बोलते काढ़े से अच्छा हो गया. अभी क्या करोगे? ये कह रहे हैं हम मांग रहे हैं. क्या करना है ना. देखिए सर, ये तो लंबा चलते रहेगा. करने के लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आई वांट टू अवॉइड अनप्रेजेंट सिचुएशंस. अगर आपके नाम पे कोई हॉस्पिटल या चैरिटीज़ में 50-60 लाख देना हो तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है. देखिए, आपको तो पता है क्या करना है.
जो डर था वही हुआ, liver cirrhosis. What's that? Cancer? No, it's not cancer. Cancer can be one of the complications of cirrhosis, but we are not going to worry about that at this point. आप मुझे कितना सच बताएंगे? पूरा सच बताऊंगा। तो फिर मुझे यहाँ आने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। See, the cirrhosis has reached an advanced stage. We'll be focusing on preventing complications and getting a transplant. Transplant? Yes, it is imperative. तो फिर बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ेगी? बिल्कुल। किस तरह की? जगन्नाथ मुनि बोले लिस्ट लाइएगा। खा लीजिए ना, डॉक्टर भार्गव ने तो दिया है। आप लिस्ट लाइए ना। जी। इसमें तो 3 इक्विवेलेंट है। लिस्ट तो बहुत पुरानी है। चल देखते हैं। I just wanted a list of a fresh list of all the companies that have not yet signed on the Illegal Treatment to Animals Act. There isn't a single pharmacy house that doesn't violate animal testing guidelines, in one way or another. This one's pretty exhaustive. It's arranged according to brand names and formula patents. And here's all the latest documentation. You can take that as well. Thank you. How's your case progressing? Oh, it'll change a lot of things now. Thank you so much. You're welcome. तो यहाँ होते हैं आपके सत्य के प्रयोग. You know, this place reeks of a violent past. Just convenient for the sun. It was the only place we found on our way. The second time we're in a biology lab this week. How are you keeping? मैं ठीक हूँ. Pastafarian. Is that a new joke? Not mine, and it's not a joke. It's a very serious religion I follow. You know, I always knew sadhu chipkar peete hain, but unfortunately liver cirrhosis is going to give you away. You know, it should have been more to do with intoxication than with drinking. हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से कल. मुंबई वापस आएंगे. आप दवाई क्यों नहीं लेते हैं?
क्योंकि कोई विकल्प ही नहीं है, हर दवा के पीछे पशु इंसान। पर आपके लेने ना लेने से क्या फर्क पड़ता है? तो फिर किसी भी चीज से क्या फर्क पड़ता है? Exactly. See, it's pretty clear how inconsequential our actions are in the larger scheme of things. मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। हमारे हर काम का प्रभाव काल आकाश में रहते हर परमाणु पर पड़ता है। अगर ये बात सत्य नहीं तो सब कुछ निरर्थक है। What is the sense of existence then? The hedonism and nihilism of your namesake Charva. So your worldview provides you with meaning, purpose. See, we are dualists. If you were to ask me, is life perpetual or temporary, I would say it's both. Temporary for the body and infinite for the soul. The soul is formless, shapeless, immaterial. It connects to the world through the body. And every minute action, even inaction, leaves behind a karmic record on the soul. And the purpose of our existence is enlightenment and eventual liberation from the perpetual suffering of life and death. Okay, so then why is there so much importance to not kill? I mean, if you kill an animal, it's probably going to come back perhaps happier. No, the freedom of choice and the right of consent is the core of our worldview. What about killing by consent? How do you judge the validity of a consent? What about the violence you are committing on yourself by not taking medication? How is your choice the choice of sanity? And how is your choice not different from that of a suicide bomber who's so convinced about the fundamentalism of his political and religious thoughts? Are you really making that analogy? Arey, kya hua? See, I'm not good at this, but I'm going to try. There are a lot of people who love you, respect you, and need you, including myself. I know you're a rational, open-minded person, so I can only suggest, please take care of yourself. I will. I'll see you later then. कुछ देर रुको. नहीं.
काट देता हूँ। अरे रहने दीजिए, नहीं नहीं। Pasareo jivo savan suhu madi suhu misu. Tattu koi kaya hi sayame isume. Such as. You know, one of my friend interns at Munshi and Lal. I think you mentioned him before. Is he good? No. But this comes from him. Apparently, they use some local muscle to threaten Maitreya. What? When? A little while ago. It was a soft call. They studied his routine for a couple of days, and then they tried to corner him on one of the rainy nights when he was just beginning his walk for code. I mean, the partners of the firm were very, very angry with their client for doing this. Now, what I'm surprised about is that Maitreya hasn't mentioned any of this to any of us. He's not going to mention this. For all you know, he won't even remember. जगन्नाथ ने एग्जैक्टली क्या कहा? बस उतना ही जितना मैंने आपको फोन पे बताया कि उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया। अरे बाप, और बहुत कम बोल रहे। जगन्नाथ का मानना है कि उन्होंने संसार भागव्रत ले लिया। अरे बाप। वो क्या होता है? It's an ancient custom in his religion. A monk ailing from an untreatable disease can make peace with himself and choose to withdraw from life. How do you withdraw from life? It's one way of saying fast unto death. Fast to death? That's extreme. But his liver cirrhosis is treatable, right? Not the way he prefers it. I don't get this idea of karma. Does the intention not matter at all? The experiments are not being conducted with the intention of inflicting pain, but the intention of relieving pain. You see, in his world, it's not all humanity that's equal, it's all existence that's equal. But anyway, keep working on it. We'll need ideas like this before we can make him budge. There was an island, and you were to be reborn as a tormentor or a slave. The tormentor would make life hell for you, and will give you infinite pain to you and your kin just for his pleasure. And he had no remorse over his actions to crush his victim. Add to that, there was no karma, no soul, no retribution, no being responsible for your actions. And yet to choose any one of them, who would he be? You do realize that you're going to give up your life for something that is nothing more than a thought experiment. And monks are supposed to be celibate, right? So I don't understand why is there so much intellectual masturbation in the first place. Look into your own religion. There's constant reference to relativity. Your ancients, they were masters of understanding. There's no one ultimate rule book for all situations. For the woman churning curd into butter, she has to pull one end of the rope and let the other end go, otherwise the rope will break. Contradictions and polarities are two ends of the same rope. You pull one end, you let the other go. Yes, it's very convenient to hold on to one rope and let the other one loose as when you feel like.
I guess we all agree with reason. Now it's only a matter of disposition. નાહમ જાણામી કંપી દેવ ન દેવ નથી ઈશ્વર નિયંતા નથી સમા ભૂમિ મંદિર ન જગ કરતા ન વિકંતા ન જગી સર્વભૂમિ ન રખાઓ ન રખાઓ નાય કાલયો આદિ નો દંડ નાયો કમો નોય ન દંડે કમો નોય ન દંડે No, no, don't get up, don't get up. No, 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 no. Keep sleeping, keep sleeping. How are you feeling? Fantastic. Are you up for some banter? Always. I got you a gift. Wait, I'll show you. Alphabets. It's amazing how we imagine that someday these few alphabets will just arrange themselves in a way and that suddenly everything will make perfect sense. The permutation of known words suddenly bringing forward a previously unknown meaning. It's so oppressive, this obsession we have with final answers. We invent God, soul, heaven, afterlife, even life imitating technology.
all sorts of transcendence to cope with the idea of an absolute end. And then we die for an idea which promises us some sort of immortality. It gives me some kicks though, to know that a part of me was a part of an animal once. A flame, a star. A part will become mineral, flow in a plant, sprout in a fruit, get pecked by a bird. Every atom of my body will be recycled by the universe. You think you're a person, but you're a colony. A microcosm which has 10 times more bacteria in its body than it has human cells. Wait, check this out. U for unilateralist cordyceps. The fungus enters an ant's body through its respiration, invades its brain, and changes how it perceives smell, because ants do everything they do from the smell of pheromones, right? So this microscopic little fungal spore then makes the ant climb up the stem of a plant and bite hard on a leaf with an abnormal force. The fungus then kills the ant and continues to grow, leaving the ant's exoskeleton intact. So a small fungus drives an ant around as a vehicle, uses it as food and shelter, and then as the ultimate monument to itself. And when the fungus is ready to reproduce, its fruiting bodies grow from the ant's head and rupture, releasing the spores, letting the wind carry them to more unsuspecting food. There. Our entire idea of free will down the bin. One single small fungus spore does that to an ant. You have trillions of bacteria in your body. How do you know where you end and where your environment begins? महाराज मेरे को सच सच बताइए आत्मा है कि नहीं है? महाराज बताइए। पता नहीं। गुरुदेव बंद क्यों है? बंद क्यों रखा? आपको कुछ चाहिए? मकबूलो जी समझने की कोशिश कीजिए, आप समझ नहीं रहे। जगन्नाथ तुम ठीक हो? आप कैसे? मजाक उड़ा रहे हो? कैसी बातें कर रहे हैं? कितना वक्त बाकी है? और कितना वक्त बाकी है? कैसा वक्त?
किस चीज के लिए? किस चीज का वक्त कर जी? गुरुदेव जगन्नाथ जी डॉक्टर साहब बुलाओ। जी उनसे कहो मैं सहमत हूँ। मेरी जाने की तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है। जी तो देखो ना, कंपनी का प्राइस 1200 था, 150 हुआ, अभी 300 पे आ गए। पर अभी भी बहुत कम प्राइस है। जो शेयर 1200 का बिका हुआ वो 300 का एटलीस्ट। जी एक सेकंड। हाँ जी सर, एक सेकंड। अरे भाई हाँ जी, 3.5 लाख रुपये डेबिट है सर। जी सर, इसका चेक ले लूँ मैं कल आपसे? जो भी है वो बाज़ार में इतना कम कोई नहीं जितना शेयर प्राइस कम है। ठीक है, आप देख लो जैसे भी सोच लो। अरे वो तूने पूछा क्या कब जा सकते हैं? आज ही। हाँ साले आज ही जा, पूछ के आना। आज ही जा सकते हैं। किसने कहा? नर्स ने। उसे किसने कहा? मुझे क्या पता, वो बोली कि तेरा रिपोर्ट सब ओके, तेरा क्रिएटिनिन नॉर्मल आ रहा है, डिस्चार्ज पेपर तैयार करो जाओ। ये सब निकाल सकते हैं क्या? देख ले शायद। तो पूछना चाहिए ना मनु तुझे यार, कोई काम ठीक से नहीं करता। तो बात की यार मैंने उससे यार। क्या देख रहे हैं? केबल वालों कैसी टच है, सभी चैनल पे यही आ रहा है। साले ये 1, 2, 3 और 84 पर ही आता है। ये देखें। और बता, नर्स ने क्या बोला? देखो पर्सनल बात है, तेरी पर्सनल बात है साले छिनाल। अरे नवीन क्या चल रहा है तुम दोनों का? कुछ नहीं सर। कैसा, सब ठीक है? एकदम फिट हो सर। आज आ सकते हैं सर? बैठ जरा, बैठ, देख ले, पैर दिखा, चार्ट वगैरह देख लेते। तो ये निकाल सकते हैं सर? हाँ सिस्टर, निकलवा दो, नहीं तो लेके जाएगा ये हीरो। सब घर पे आइए ना डॉक्टर साहब कभी। घर पे आइए ना कभी। ये हीरो तेरे घर पे मैं बहुत बार आ चुका हूँ। मैं जब से बॉम्बे आया हूँ तब से तो आप कभी आए नहीं हैं। काफ़ी टाइम हो गया आते आते। कैसी है तेरी नानी माँ, कैसी है? एकदम सही है सर। नानी माँ की वजह से तेरा सब काम अच्छा तरह से हो गया है। जी। क्या कहते तुम नानी माँ को? अज्जी। अज्जी? अज्जी। अज्जी तो मराठी में भी कहते हैं। वैसे हमारे यहाँ तो बासा बुलाते हैं, पर अज्जी। कन्नड़ा नहीं आती तेरे को? नहीं डॉक्टर साहब, बस माँ जब गुस्से में होती थी तब कन्नड़ में बात करती थी। तू थोड़ी गालियाँ सीख गया। जी गालियाँ ही आती हैं बस। लेकिन अज्जी को तो बहुत सारी भाषाएं आती है, स्पेनिश बोलते हैं,
पर मारवाड़ी नहीं आती ना सर। न्यूज़पेपर मैडम। नहीं, मुझे इन भावों का ज़्यादा लगता नहीं लगता है जी। मेरे हिसाब से लेना चाहिए प्रॉब्लम मालूम है जब जिस स्टार्स पेपर बनाए थे जी तब मैंने कुछ दोस्तों को बुला लिया था, सोचा तुम्हारे लिए एक पार्टी करेंगे। जी जी। तुम भी कुछ अपने दोस्तों को बुला लो। यहाँ बॉम्बे में तो कोई दोस्त नहीं है मेरे। अच्छा, वो मुख्तियार अली जी शहर में आए हुए थे, जी मैंने उनको बुला लिया है। उनका संगीत पसंद है? अरे वो भी तो राजस्थान से है, कभी न कभी तो सुना होगा। जी मौका नहीं मिला कभी। कैसे हो राजू? बढ़िया, आप कैसे हो यार? एकदम बढ़िया यार। अच्छा, मैं भी आती हूँ। वैसे मैंने डॉक्टर साहब को भी बुलाया था, लेकिन उनका कुछ ऑपरेशन चल रहा है। तुम्हारी दोस्ती हो गई उनसे? जी जी, आपकी बहुत तारीफ करते हैं। क्रांति गीत लिखा करते थे डॉक्टर केरकर। आपकी वो मित्र की तरह जो मुझे मिलने हॉस्पिटल में आई थी। हाँ, अरे तुमने उनकी किताब पढ़ ली? जी बस समय ही नहीं मिला। जब किताब दी थी तो पूछा था कि पढ़ोगे कि नहीं, तब हाँ क्यों कही? जब कोई अपनी किताब देता हो तो उसको कैसे मना कर सकते हैं कि नहीं पढ़ूंगा। देखो आज शाम को आ रही हैं, कुछ पूछेंगी तो सच सच बता देना। जी। बहाने मत बनाना कि वक्त नहीं मिला, ठीक है? जी। Wait a sec. The address is right here. It's on the poster. It's not .net. It's .edu. EDU. Yeah? I'm sorry. Chalo, you got it now, na? Okay. ठीक है, चलो. Bye. Hey, how are you? बस ठीक हूँ, आप कैसे हैं? I'm good, yeah. How are you feeling now? बिल्कुल फिट हूँ अभी। क्या कर रही हैं आजकल? A lot of things have been happening. Bhanu must have told you an RTI activist has been imprisoned in Chhattisgarh for baseless charges. कबीर सुनो भाई सालो सभी सासरे जा इन सासर यारो पंथ निरालो इन सासर यारो पंथ निरालो गयो सो पाछो नहीं आए बटवलो आयो लेवन ने तबलो आयो लेवन बटवलो आयो लेवन ने रे। सेक्सरिया मिलना चाहता है? सेक्सरिया नहीं चाहिए, सेक्सरिया। वो यामामोटो वाले आ रहे हैं उनके साथ? नहीं वो कह रहे हैं आप काम लें। So let us use her legs. आप action करो. Meena, that will be a good coordination. Meena, what do you think got you in the first place, please? I know. Topic is court case. You don't have to answer that question. Hey, how are you asking these things? मैंने वोट नहीं किया। हमारे महाशय को आसपास की दुनिया से ज़्यादा पैसों में ज़्यादा इंटरेस्ट है।
अच्छा होगा किसी को तो पैसों में इंटरेस्ट हो। जब हमारी तरह फक्कड़ निकलेंगे तो हमारी पेंशन कौन भरेगा, है ना? Call and then he wanted to meet. हो जाएगा, टाइम ही क्या I don't know. I'm just done with him. And 6 मिनट हो गए। कॉलेज टाइम पसंद है आपको? एक नंबर देता हूँ, लिख लो। काम आ जाएगा कभी? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। अरे मेरे को दो ना यार, कभी रात में रात काम आएगा, मन ही बन जाता है कभी। वो नंबर है ना यामामोटो मेरा? की मीटिंग का क्या हुआ? यामामोटो? हाँ, करो ना। ले। चेक आया उनका। वो दूसरा वाला पढ़ा क्या? कौन सा? अरे ये पीछे वाला। ये 28 का है। अरे ये 28 यार, बहुत बढ़िया है। और दानिमा की तबीयत कैसी? ठीक है। कभी कुछ काम हो तो बोलना, लीगल कम लीगल। रात तक पहचान अपनी। राव स्टेट होम मिनिस्टर। अच्छा अच्छा अच्छा। फॉरवर्ड कर लूँ ये? हाँ कर ले। बेटा नर्स को बुलाना जरा। बेल बजाई मैंने 2-3 बार। जरा किसी नर्स को बुला देंगे प्लीज। अभी कोई नहीं है, सब नर्स ऑपरेशन थिएटर में है। तो आप देख लीजिए। मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। अभी कोई नहीं है। आपको पेशाब करना है? करना तो था लेकिन रोक लूंगी। मैं करवा देता हूँ। नहीं नहीं, ठहर जाओ 2-3 मिनट। 2-3 मिनट में कोई नहीं आने वाला, कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। जब आप इतना कुछ समझती हैं तो शर्म क्यों करती हैं?
मैं ज्ञानी हूँ, गवार हूँ, ये कहना एक बात है, पर मैं सब कुछ पैसों के लिए करता हूँ, ये कहोगे तो चुभेगा नहीं मुझे। मैं तुम्हें टोकती हूँ पर सिर्फ इसलिए कि तुम जीना सीखो। तो सिर्फ आपके हिसाब से जीना ही तो जीना नहीं होता ना। नहीं तो फिर तुम बताओ क्या होता है? मैं अच्छा खाता हूँ, अच्छा पीता हूँ, जिन लोगों के बीच में उठता बैठता हूँ वो मेरा सम्मान करते हैं। इतना काफी है? मेरे लिए काफी है। जिंदगी इतनी विशाल है, दुनिया में कितना कुछ है। मुझे नहीं है जानने की इच्छा, तो इससे क्या मैं बुरा आदमी हो जाता हूँ? देखो, अगर कुछ समझना नहीं है ना तो अनशंट बातें मत करो। अच्छा आप बताओ, जिंदगी में क्या चाहिए? खुशियाँ और थोड़ी बहुत मानवता होनी चाहिए। इतना क्या काफी नहीं है? काफी है, और बात अच्छे बुरे की नहीं, भावनाओं का एक पूरा दायरा है। बात है उसे अनुभव करने की, समाज के साथ जुड़ने की। तो दया तो है ही ना मेरे में। तुम्हें तो पता भी नहीं कि तुम्हारी दया की जरूरत कहाँ किसे है, तुम्हारे किस काम से किस पर क्या असर पड़ता है। इस दया को अपने मन में रखो, क्या फायदा? तुम्हारे समाज को तुम्हारे होने से कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। आप किसी स्वभाव की वजह से मातंग आ गई थी, बड़े बड़े लोगों की खोखली बातों से दूर भाग जाना चाहती थी। ये भी तुम्हारी गलत फहमी है। वो खोखले नहीं थे, ऊंची ऊंची इमारतों में सोए हुए बुद्धिजीवी नहीं थे, कर्मठ लोग थे। अपनी जिंदगी किसी बड़े उद्देश्य के लिए दे देना बड़ी भारी अपेक्षा किसी से भी। देखो, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं डालना चाहती, जो कि मैंने शायद तुम्हारी माँ के ऊपर डाला होगा। कितना कुछ मिला था उसे, उसने बांटा क्या? तो आपने कौन से झंडे काट दिए, कौन सी दुनिया बदल डाली? जब देश आजादी के लिए लड़ रहा था तो माँ को पड़ोसियों के यहाँ छोड़कर आप चली जाती थी गांव गांव लोगों को बताने के लिए कॉन्डम पहनो, कॉन्डम पहनो। हो गई क्रांति, कर ली समाज सेवा। आपके काम से कुछ भी फर्क पड़ा होता तो ये 125 करोड़ कहां से आ जाते? 3 पीढ़ियों से हम गुलामी और दमन के खिलाफ लड़ रहे हैं, आज ये देखने के लिए कि मेरा अपना नाती अमेरिकियों का मुंशी बन बैठा है। सठिया गई हैं आप, विदेशी कंपनी क्लाइंट्स हैं मेरे। संस्कार तो देखो अपने, अपनी नानी माँ को बोल रहे हो सठिया गई है। अच्छा माफ करें, इस विषय में अपने जब बात करेंगे जब या तो मुझे आपकी बात समझ में है या आपको मेरी। तब तक देश आजाद हो चुका था, इतिहास पढ़ लो। तो अज्जी का ख्याल रख, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो मैं करूँगा क्या? पूछ लूँगा किताब कौन सी पढ़नी चाहिए। पागल हो गया क्या? क्यों? पन्ना पन्ना पूछेगी। इसके अलावा हाँ नहीं, वो जो चीज़ें जो बनाई आपकी, आपने आप खेती वगैरह भी करते हैं, कुछ खेती बाड़ी भी है। ये क्या देख रही हैं आप? 1 2 सिर्फ 3 84 भी आता है। ये देखो। मर गया क्या रे इसका? नहीं, इसके पति बेचारे की दुकान लगी है। पिछले महीने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया था सस्ते से हॉस्पिटल में, तो 1 2 दिन ही रेस्ट किया, ज़्यादा किया नहीं। मजदूर आदमी था ना, तो कल कहीं काम करते करते गिर गया। सेठ लोग इसको यहाँ ले आए। जब दोबारा ऑपरेशन किया तो पता लगा किडनी नहीं है। मतलब पीछे जब दोबारा खोला हुआ ऑपरेशन करने के पीछे निकाल ली हुई किडनी पिछले वालों ने। ऐसा कैसे? पावर है क्या यार, होता रहता है, छोटे मोटे हॉस्पिटलों में ऐसा चलता रहता है। तो जरा जब कुछ क्या ना, कौन सी तारीख को हुआ था ऑपरेशन?
क्या बावला हो गया क्या यार तू यार, ये बंद है, 150 सीढ़ियाँ नीचे जाना पड़ेगा। तो प्लीज़ कुछ कहना चाह तू भी ना यार। पिछले महीने की 16 को। तेरा कब हुआ था? 17 में। जरा पूछ के ना ब्लड ग्रुप पूछो उसको। अरे यार इतनी सीढ़ियाँ। रुक आता हूँ। तेरा ही है। एक्सक्यूज मी, शंकर कौन से वार्ड में? कौन शंकर? कल जिसका ऑपरेशन हुआ उसकी बीवी रात में रो रही थी। वो कल डिस्चार्ज ले चुका है। कल ही तो उसका ऑपरेशन हुआ था। लेकिन डिस्चार्ज ले लिया है। आप मुझे एड्रेस देख के दे सकती हैं? थोड़ा टाइम रुको। दिवसांनी बघूया आपण लघवीची रिपोर्ट करून ते व्यवस्थित असेल तर आपण बंद करू, तोपर्यंत चालू ठेव. होय होय. ओके 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 बाय. हाँ नवीन कैसा है तू? बस सर ठीक हूँ. हाँ बोल सर मुझे बताया गया था कि मुझे मरे हुए आदमी की किडनी मिली है. ऑफकोर्स यार, तेरे को जो ब्रेन डेथ वाले मरीज रहते उसकी किडनी मिलती, नहीं तो घर से कोई रिश्ते वाले की किडनी मिलती, और तो कोई चारा ही नहीं था अपने को. तो मुझे मेरे डोनर की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? मैंने हाँ एक एनजीओ को बताया तो था, तेरा नंबर भी दिया था, वो तेरा कांटेक्ट तो करेंगे. वो काम करते हैं डोनर रिसिपिएंट को मिलाने का. ये फिर भी एक कार्ड रख ले, उनका नंबर है, उनका कांटेक्ट कर लेना, तेरे को जरूर हेल्प कर देंगे. अब डॉक्टर साहब ने कह तो दिया तुझे उसकी किडनी नहीं मिली, फिर उससे मिलके करना क्या है? अपने को क्या पता किसका क्या एजेंडा है यार. एक बार एनजीओ वालों से बात हो तो तसल्ली हो जाएगी. मान ले पता चलता है तेरी किडनी चोरी की है तो क्या करेगा फिर? वापस कर देंगे यार. उधर देख. रुक रुक रुक. अरे बावरा हो गया क्या? कौन करता अपनी किडनी वापस? क्यों नहीं हो सकती क्या? नहीं. स्कूटर बढ़ेगा. उधर देख. गाड़ी बड़ी है, नहीं जाएगी यार. आगे ले आगे ले आगे ले आगे ले आगे लेके क्या करेगा जब जाएगा? अरे जाएगा ना अंकल यार. हो जाती होगी, फिर अपने क्या करेंगे? इंतजार कर लेंगे. एक सेकंड अंकल देखता हूँ. इधर इधर घूम घूम. उधर जब उतरा. अरे कुछ नहीं होगा, चल फंसेगी ये तो. एक सेकंड रुक, तो मैं देखता हूँ. कहाँ फंसा दिया यार? पीछे ले पीछे ले पीछे ले. अरे बावरा हो गया क्या? इधर से नहीं निकलेगी, चल पीछे ले. पैसे दे देंगे यार. गलत है ना भाई, थोड़ा पीछे हो ना. रुक रुक, मैं बाहर निकल कर देखता हूँ. अरे सब तो सेट हो गया अपना अब. अरे रुक ना यार. जी हाँ जी 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 थैंक यू थैंक यू. होगी तसल्ली? हाँ एनजीओ वाले बोल रहे हैं सब ठीक ही है यार. तो चल चले आ जाओ हॉस्पिटल चलते. सुन, यहाँ तक आए तो मिलकर चलते हैं ना. सिंगल 7 6 and 6. टिकट ले लो. 4 and 4 44. मैडम शंकर आया कौन से? 1 and 5. 1 and 5. 1 minute. 3.
सीधा चल के आपको सचिन के बिल्डिंग के आगे और 2 बिल्डिंग के बाजू से लेफ्ट टर्न लेना। 246 कट आपका। अरे छोड़ ना। हाँ जी। नंबर बुला आंटी। आप यहाँ से जाइए। मैं आना लेफ्ट मैप बना देंगे। कितना कार्ड? शंकर का घर इधर ही है। शंकर का ऊपर। मम्मी दूसरी बार के नीचे ना। शंकर का घर कौन सा है? ऊपर है, सीधा सीधा इधर। हाँ शंकर का घर इधर है। नहीं पतली तरफ होगा। इधर इधर यार, किधर जा रहा तू? हाँ यहाँ पे नहीं वहाँ पे रहता है समोसा वाला ना। समोसे वाला नहीं। हाँ वो जो बिल्डिंग में काम करता है। ध्यान से। कैसे चल रहे थे भाई इतनी सीढ़ियाँ? देख यार ऊपर सीलिंग पे है। सीलिंग पे है ना आजकल। चल अरे ओए धक्का दे पीछे से। घूम तू। अरे घूम साले ऐसे अरे धक्का दे। ऐसे बचेगा। खाया पिया पचा दिया सारा। चल बेटा शंकर का घर कौन सा है? बच के ध्यान से। हेलो। धीरे धीरे। आंटी हाँ ये शंकर का घर है? नहीं ये नहीं है, वो वहाँ है। कहाँ? अरे सुनो, बोलो आंटी। उसको तो पुलिस उठा के ले गए। कभी? 2 मिनट पहला। मामले के बारे में कुछ नहीं जानती थी पहले। So what happened to the similar case that happened in Gurgaon 6 months back? काय म्हणताय तुम्ही? हे तुमच्या पुरावा व्हॅलिड नाही ना. अरे प्रेस वाले तर काही म्हणतील. कोण पाहिजे नाही तुम्ही ताबडतोब त्यांना जाऊ. तो कशाला आमच्या तो बाहेर आहे. काय आम्ही काय करायचं साहेब माझा ऐका हे बघा हे लिहिले याच्यात सगळं. खाना खाया? उन लोगों को सजा तो होगी ना साहब? होगी ना। सब छूट जाएंगे साले। हमको कोर्ट कचहरी के लफड़े में दौड़ाते रहेंगे। मैं कहता हूँ भाड़ में जाए साले सब। उनको उनका भगवान देख लेगा। कोर्ट कचहरी के लफड़े में नहीं पड़ना है साहब। ये रखिए। आप प्रेस वाले हैं? नहीं। पुलिस के आदमी हैं? नहीं। साले क्या सोचता है? पैसे देकर चूट दादा मेरी किडनी। छोड़ शंकर। कैसे करूँगा सब कुछ मैं? पानी पिला दो। अरे भाई साहब क्या हुआ? अरे कुछ नहीं है भाई, तुम अपनी चाय पिया। हमने तुम्हारी किडनी नहीं चुराई। हम लोग मदद करना चाहते हैं। कैसे करूँगा साहब? हम मिलकर ढूंढेंगे उसे।
परसों आए। हाँ परसों अगर गेस्ट लोगों को बुलाने के बाद अगर नहीं आएंगे तो परसों पक्का। हाँ बोलो साहब को लेके आ जाओ। हाँ पक्का नक्की ओके चलो ठीक है थैंक यू ओके गाड़ी नंबर MS03 AB 1275 सीरियल नंबर 53 बड़ाला पुलिस स्टेशन वहाँ पे 4 लोग एक साला सबसे में बहुत जुगाड़ू आ थैंक यू स्टॉकहोम कहाँ है? अपने क्या पता कुछ मैं नया आया था तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था जनरल में से सीधा पूछें किस चीज़ की बात है? तेरा रूममेट है ना रात में उसकी बर्थडे पार्टी ये और ने याकोब्सन अच्छा आदमी लग रहा है बहुत विस्तार में पूछा नहीं उसने कौन क्या कब कैसे संभल कर बहला फुसला कर बात कर लेना वरना यहाँ तो बात बात पर सू कर देते हैं आप तो चले जाओगे मुझे यहीं रहना है बिल्कुल अरे देखिए कुछ खड्डा नहीं है नहीं इधर से तो नहीं निकल पाऊंगा मैं भी इधर से निकलता हूँ दरवाजा लॉक किया Welcome. हाँ tack. Yeah, yes. Welcome. No. Leave the shoes. Are they on. okay? Yes. हाँ tack. Just step in the sofa. Aja भाई Ja. Hej Ajay Hederjok Hi Naveen Ja, hej, welcome. Du nämnde att din vän jobbar med någon intresseorganisation. पूछ रहे हैं कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं आप एनजीओ में इनसे पूछ इन्हें पता है इनकी किडनी कहाँ से मिली इन्हें Njure? Ni sa njure, kidney? हाँ किडनी vet du vem som donerade din njure Nej, jag vill inte prata om det. Och det är allt. इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं Har du någon legitimation som jag skulle kunna få se? यार ये आईडी मांग रहे हैं पंगा हो जाएगा चल चलते हैं Your kidney stolen from this man.
No, donated. I paid a lot of money to everybody. What does he mean by stolen? Stulen. Det vet jag väl att stolen means stulen. Men vad menar han med stulen? En man som behövde pengar sålde sin njure. Det händer hela tiden i Indien. Jag vill inte prata mer om det där. Jag tycker att det är bäst att ni går nu. एक आदमी को पैसों की ज़रूरत थी तो उसने इनको किडनी बेच दी और इंडिया में तो ऐसा ही होता है ऐसा बोला इनको तो पूरी कहानी बताना है Men lyssna. Nej. Ge oss bara en minut och Nej, du ska lyssna på mig nu. Jag bjuder in er i mitt hem, ni kommer hit. Ni säger att ni jobbar för någon intresseorganisation som jag överhuvudtaget aldrig ens har hört talas om. Och så visar ni mig det här. Ni är ju lögnare. ये कह रहे हैं कि इनके घर में हम घुसकर आ गए और इनको झूठ बोल दिया है कि हम एनजीओ से हैं और Vedu, den mannen kom in för att göra en appendixoperation. Och en månad senare får han veta att njure är stulen. Bedrägeri, the big scandal. Och alla... राजेश थरूर ने इसका ऑपरेशन किया था क्या नहीं? हाँ, okej. Och alla doktorer som var inblandade är häktade. Ja. पूछना राजेश थरूर ने किया? अरे यार वही पूछ रहा हूँ ना, एक मिनट रुकना. Rajesh Tharoor, han är fängelse in jail. Ja, in jail. Han är en god man. घंटा मेरा. अरे कह रहे हैं कि अच्छा आदमी. छोड़ना. Det har visat att han är en av de största profitörerna. Ja. Så att ni fick en köpt njure. Är det så? Ja. वही तो. इनको तो बोला था यार किडनी खरीद के दे रहे हैं करके. तो किडनी खरीदना ठीक है? ये सही है. Tycker du är det rätt att köpa en njure? किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाना ठीक है? Ja. Tycker du är det rätt att utnyttja en annan mans fattigdom för egen vinning? Det här är inte rätt. Det är orättvist att spela på min skuld. यार ये कह रहे हैं कि इसके गिल्ड के साथ खेल रहे हैं. Vad är det ni vill ha av mig? क्या चाहिए तुम्हें? पूछो. पंगा हो जाएगा यार, तेरे को बोला था मैंने. Ja, hej Lena, det är jag. Ja. Nej, du, jag har 2 killar från Indien här. Ja, de sa att de jobbar för någon organisation som jag aldrig har talat om. Så... Du, de frågade mig om min njure. Ja, men det var väl inte det jag frågade om. Du, de säger att den är stulen. Hur i... Ja. Jag ringer till dig sen. Ja, hej. Jag har ingen aning om ifall det ni säger är sant. De sa till mig att njuren köptes av en fattig man som behövde pengar. Och det var en ansenlig summa. Ja, det kändes inte bra alls. Jag hade någon gnagande olustkänsla under hela den här
proceduren, men vad skulle jag göra? Jag vet inte, det var... Skulle jag försöka bara vänta på att de skulle hitta någon njure som matchar, eller annars skulle jag dö om de inte hittade någon. Vem som helst skulle göra det jag har gjort. Det är klart att de försökte skydda mig med att säga varifrån njuren kom. Och att det var... Eller också så var de väl bara rädda för att förlora en kund. Men vad skulle jag göra? Även om jag fick reda på att den var stulen. Jag tror att ni har hittat på allt det här. Jag tror att ni har hittat på allt det här och spelar på min skuld bara för att tjäna lite pengar själva. Ni är lögnare. Och ni borde försvinna härifrån innan jag kallar på polis. यार कह रहे इनके जगह कोई और होता तो यही करता, और इनके पास तो कोई ऑप्शन ही था दूसरा. अगर किडनी के लिए वेट करते तो ये मर जाते, समझ रहा है तू. और अब ये कह रहे हैं कि पुलिस को बुलाएंगे क्योंकि इनको लग रहा है कि हम यहाँ आए और इनसे पैसा लेना चाहते हैं. भाई चल यहाँ से, मेरे बात सुन, चल. हाँ फंसा दिया है. बात करना उनसे. बोल इनको कि हम मदद करना चाहते हैं. शेखता vi vill bara hjälpa dig. Förstår du? Hur då? कैसे करेंगे पूछ रही मदद. शंकर को उसकी किडनी लौटानी होगी. आश, फिर तू वही बात कर रहा है. Shankar måste få tillbaka sin njure. Det är omöjligt. Men hur skulle det kunna vara en lösning? कह रहे हैं बेवकूफ़ी है. कैसा सुझाव दे रहा है तू? Det är vansinne. Jag kan inte ge honom tillbaka sin njure. कह रहे हैं कि किडनी वापस नहीं दे सकते. Jag ska få fram en donator. कह रहे हैं डोनर ढूंढ देंगे. Jag ska betala för operationen. और उसके ऑपरेशन का पूरा पैसा भी दे देंगे. खत्म कर दे यार बात. Jag tar ansvar för allt. हर चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं ये, जो भी हुआ है. Jag vill verkligen göra det. और ये दिल से चाहते हैं कि सारी जिम्मेदारी ले लें. ख़त्म कर दे यार. चलो ठीक है फिर. हाँ ठीक है. Han säger det är bra, det är okej. Är det okej med dig? Ja. Eller? Tack så mycket. Tack. Ses snart.
दारारी रारी रे यारा दी रे यारा दे दारी रे यारा दी रे यारा दे दारी रारी रारा दी रारी रारी रारा दी रारी रारी रे दारारी रारी रे यारा दी रे यारा दे दारी रे यारा दी रे यारा दी दारी रारी रारा दी रारी रारी रारा दी रारी रारी रे अजय नवीन Thakuraya Purinte when there are in sock melon भाई कह रहा है कि अजय और नवीन आपकी अभी तक जितनी मदद की उसके लिए शुक्रिया और वो हमसे मिलना नहीं चाहता वापस। अगर जो भी बातें हैं वो इसके और शंकर के बीच में हैं और अगर हमको उनसे बात करनी है तो कह रहा है कि मेरे लॉयर को फ़ोन करो। फ़ोन नंबर दिया? हाँ दिया है लॉयर का नंबर। तो चल फिर इसके फिर से बात करते। एक सेकंड उठा नहीं रहे कोई। हेलो बात कर ले। हाँ हेलो हाँ भाई कितनी परियां बच गई? कुछ नहीं रहे और बता ले बात कर। हेलो हाँ साहब। हाँ शंकर कैसे हो भाई? बहुत बहुत थैंक यू साहब आपका, आपने इतने जल्दी सब ठीक कर दिया। सोचा भी नहीं था इतने सारे पैसे मिलेंगे। क्या बोल रहे हो भाई? सुनाई दे रहा है ना साहब? सवेरे गोरा आकर 6.5 लाख रुपए दे करके गया है। तुम वो पैसे मत लेना शंकर। क्यों? वो पैसे तो ले लिया हमने। नहीं शंकर तुम वो पैसे लौटा दो, तुम्हें तुम्हारी किडनी वापस मिलनी चाहिए, हम लड़ेंगे। अरे पागल हो गए क्या? किडनी का क्या करूंगा मैं? 30 हजार रुपए किडनी का भाव चल रहा है, वो 6.5 लाख रुपए दे करके गया है। शंकर किडनी का कोई मोल नहीं होता, हम कोर्ट में जाएंगे, तुम्हें तुम्हारी किडनी भी वापस मिलेगी और पैसे भी। और नहीं मिले तो हम दे देंगे। अरे आपको क्या करना है? आपने इतना कर दिया ना, बस अभी कोर्ट वोट में जाना नहीं है मुझे। वो हर महीने अरे तुम फोन करके गया। ये रख भाई अपना फोन। हेलो मेरी बात तो सुन भाई। वो तो मुझे देके भाग गया। वापस दे फोन। शंकर रुक। अरे मेरे बाप रुक। एक मिनट ऊपर फंस गया यार कर। अरे सुन शंकर तुम्हें तुम्हारे पैसे मिलेंगे, इससे कहीं ज्यादा मिलेंगे, हम लड़ेंगे उसके लिए। अरे मेरे बाप ये वही बात क्यों मेरे पीछे पड़ा है? हर महीने पैसे का जुगाड़ हो रहा है भाई, काय को बन के रहना है, काय को हमारी गांड मार रहे हैं, हमको जीने देना भाई। ये रखना यार रख। अरे शंकर ओए ओए Okay, this is omnacotril, which is 20 mg now. Visoclon is 10 mg but it's been changed to 5. So let me just keep it with me so you don't get confused. Okay. This is SOS only when required. जी. And all the others are the same. Okay. It's all here in the box. Okay. कुछ हो नहीं पाया। जितना कुछ हुआ क्योंकि तुमने कुछ किया। इतना ही होता है।
तेरा जो डोनर है वो सर की चोटी वजह से मारा क्या? हाँ, खाता पीता यंग आदमी था यार। ये म्यूजियम में क्या करने वाले हैं? उसके कुछ वीडियो देखने वाले हैं। एनजीओ वाले ने उसकी फैमिली वालों से जमा किए हैं। तो उसकी फैमिली से मिले हैं क्या तुम? नहीं, वो लोग तो दुबई शिफ्ट हो गए यार। तो बस तेरे लिए इतना तामझाम? क्यों, बाकी रेसिपिएंट्स में गए। मतलब जैसे अपने को किडनी मिली वैसे किसी को दूसरी मिली होगी, फिर किसी को दिल, फेफड़े वगैरह सब चीज़ें। तो क्या एक आदमी का सब सामान ट्रांसपोर्ट हो जाता है आजकल? हाँ, चमड़ी भी हो जाती है। आँख और कान? आँख तो हो ही जाती है यार, कान का पता नहीं। मैं भी चलूँ क्या? नहीं यार, सिर्फ रेसिपिएंट्स के लिए अलाउड है। ऐसा कह रहे हैं कि शहर में ऐसा पहली बार हुआ कि एक आदमी से 8 लोगों को ट्रांसप्लांट हुआ। मैं सोच रहा हूँ मनु कैसा लगेगा यार बाकी लोगों से मिल करके। मतलब हम सब लोगों के अंदर एक ही आदमी के पुर्जे हैं यार। पुर्जे मिलाकर ही तो आदमी बनता होगा। कुछ और भी होता होगा ना, वरना पुर्जे बदलने से आदमी बदल जाता। क्या पता यार। अरे ये कौन सी दीवार का रंग लगा लिया? क्या हुआ? पीछे देख तो सही। क्या पता, चल ठीक है। ओके बाय। Naveen? Hi, I'm Yuki. I spoke to you on the phone earlier today. Come. मैं लेट तो नहीं हो गया? नहीं, 4 लोग आ गए हैं, 2 लोग और आ जाएं, फिर हम स्क्रीनिंग शुरू करेंगे। अच्छा, मुझे लगा 8 लोग आने वाले हैं। हाँ, पर जिनको दिल मिला है उनकी तबीयत इतनी ठीक नहीं है। His transplant was successful, but he's still vulnerable to infection. ये organ donation forms है. Please encourage your friends and family to pledge their organ. Yeah. This is for you. You got the left one, right? हाँ, ये डॉक्टर काजा है, हमारे एनजीओ के चेयरमैन। हाय, हाउ आर यू सर? तो क्या हम हमारे डोनर का होम वीडियो देखने वाले हैं? नहीं, he was a hobbyist cave explorer and we found some videos shot by him, तो वही देखने वाले हैं। Just have a seat with the other recipients and please keep your phone on silent. Okay, thank you.